हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सोर्स एंड हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है और अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो हिस्ट्री में सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज एंड टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट, एंड all government exams will ask you about a historical site, about a book written by some important person, maybe Kalidas, maybe Patanjali, maybe some other king like Samudragupta, or maybe you know, so sources are important. And sources are also important to not only understand the terminology but to understand history critically, because gone are the days where direct question comes from the from ncrt or from any other book. So you need to understand the transition also, and sources helps us do that. So let us understand source kya hota hai, or why are they so crucial, why are they so important. So let us look at the definition. Source is a material remain. Now, here, material remain means anything that you can touch, feel, and you can see with your eyes. So, it can be human made and both natural. So, अब human made का example तो coins हो सकते हैं, अशोकन pillars हो सकते हैं, डांसिंग गर्ल फ्रॉम हड़प्पा हो सकती है, कोई और स्कल्प्टर हो सकता है, कोई और पेंटिंग हो सकती है। लेकिन व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल सोर्स? सो भीमबेटका caves could be an example of a natural source where paintings are done and you analyze those paintings and try to understand that how mesolithic and neolithic period people lived their life, what were their cultural practices, what were their daily activities which they have shown and showcased in those paintings. So it is both human made and natural. Now it obviously belongs to the past because we are trying to use that evidence, use that source, उस source को हम use करने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री को, एंशियंट मैन की लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कि उनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, क्या क्या करते थे वो, और क्या क्या यूनिक प्रैक्टिसेस थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन्स के पास एक स्किल थी मधुचिष्ट विधानम, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो नॉट ओनली जस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट बट ऑल्सो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है एनालाइज. What do you mean by analyze now? Reconstruct, we are understanding that coming from a hunter gatherer society, we have now a settled society. Then there were Mahajanapadas, and then there were bigger kingdoms, and then there were empires. So it is whole a process. So we are understanding that reconstruction, but how do we analyze? We analyze, for example, through आयरन जब आता है तो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. आयरन मेक्स एग्रीकल्चर इजियर, दैट इज वाई सोसाइटीज गेट वेल्दियर. देयर आर द सेटल्ड मैन गेट्स मोर सबसिस्टेंस से सरप्लस फूड प्रोडक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं. दो हड़प्पा में भी वो देखते हैं, लेकिन उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेपरकशंस भी होते हैं. तो दैट इज हाउ यू एनालाइज. फॉर एग्जांपल, हड़प्पा में आयरन नहीं मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कॉपर मिलेगा. चारकोलिथिक पीरियड इसीलिए उसको कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा में आयरन नहीं मिलता है. तो इसीलिए हड़प्पा डिफरेंट है आयरन एज कल्चर्स से. अब किस तरीके के सोर्सेज होते हैं? व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज? सो देयर कैन बी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड देयर कैन बी लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल में you understand that there can be a granary, can be our archaeological source. एक अशोकन पिलर एक सोर्स हो सकता है, कॉपर कॉइन सोर्स हो सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स, कनिष्का के गोल्ड कॉइन्स इज अ सोर्स. Then tools can be source and weapons can also be a source. Now we can also say that there are mixed sources because for example अशोकन पिलर है और उस पर लिखा भी है, तो हमें उससे स्क्रिप्ट के भी बारे में पता चल रहा है, हमें उसकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता चल रहा है, हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल रहा है, कैसे गवर्नेंस होती है, रोल ऑफ अक्षय पटाल का क्या है, धम्मा महामात्यास क्या कर रहे हैं. तो एक तरीके का मिक्स्ड सोर्स कह सकते हैं अशोकन पिलर्स को. देन देर आर लिटरेरी सोर्सेज. कोई भी बुक, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बचा है जिसको हमने रिट्रीव कर पाए हैं, जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं हड़प्पन की जो सील्स हैं, लेकिन अभी तक उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. इट इज़ अनडिसाइफर्ड, सो वी मे नॉट गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंग्स, मे बी अ लॉट ऑफ advances, scientific advances that Harappans had, we are not able to understand because the script is undeciphered. So literary sources can be divided into many categories. It can be an official record.
For example, Ashokan pillars. There can be biographies, there can be autobiographies, there could be drama and poetry. Mahabharata is a beautiful example of poetry. Then there are important texts which are scientific in nature. For example, Shilpa Sutras. There can be text which talks of astronomy. There can be text which talks of medicine. We all know about Aryabhatta. We all know about Patanjali. We all know about important dramas that were written. We all know about that famous drama, Abhigyan Shakuntalam. So we all know about these dramas, these poetries, these texts. There are agricultural texts. There is grammar. Tolka Payyam is an example of grammar. Tamil grammar का example है Tolka Payyam. So there are Sangam literatures. There are Pattu Pattu songs which are in Sangam literature. So we need to understand the essence. We need to understand कि ये कितने important है. We cannot say anything in history when there is no evidence. हमें granaries का पता चला तो हमें पता चला कि there is surplus production in or there is a governance in Harappa. और अशोका का conversion to Buddhism और अशोका का conversion to a peaceful path to Dhamma घोषा from बैरी घोषा. मतलब दुश्मन से या किसी से भी ना लड़ने की स्ट्रैटेजी जो थी उसकी, और वो धम्मा की तरफ जब पाथ पे पड़े तो ये हमें उसकी स्क्रिप्ट से पता चलता है, अशोकन पिलर से पता चलता है. तो कुछ भी हम बिना एविडेंस के हिस्ट्री में नहीं कह सकते, बिना सोर्स के नहीं कह सकते. इसीलिए सोर्सेज जो है वो बहुत क्रूशल है. अब क्यों इम्पोर्टेंट है उसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं. इट इज एन एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट लाइफ. अब पास्ट लाइफ में फॉर एग्जांपल देयर इज सम पीरियड इन हिस्ट्री कॉल्ड प्री हिस्ट्री, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई एविडेंसेस ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, उसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं. तो उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चलेगा कि मीजोलिथिक लाइफ कैसी थी, न्यूलिथिक लाइफ कैसी थी, जब लोग जनपदा में रहते थे तो कैसे रहते थे, क्या women were participating in the activities of governance, or women were part of the leadership roles, or what kind of economy different थी प्री या वैदिक टाइम्स में और लेटर वैदिक टाइम्स में, उनकी साइट्स कैसे डिफरेंट थी. तो हमें पता चलेगा ये सब. एज आई सेड, सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो अभी मैंने एग्जांपल दिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस रोल्स, लीडरशिप रोल्स. Queen Didda is an example of almost transitory period between ancient and medieval in Kashmir, and she was a very famous king. She was a very famous ruler, I must say, not king. Then examples of pots, jewelry. अब वेदर आफ्टर लाइफ में वो लोग बिलीव करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रेव्स मिले हैं उसमें पॉट्स मिले हैं, उसमें ज्वेलरी मिली है, तो वो आफ्टर लाइफ के बारे में बताते हैं कि क्या बिलीव थी, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस थी. हड़प्पन्स बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ. बोन्स ऑफ हॉर्स फाउंड हुआ है वैदिक पीरियड में, विच सेग्रीगेट्स इट फ्रॉम इंडस वैली पीरियड. ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, बट इसमें आंसर इसका ये ही है कि लेटर इंडस कल्चर्स में देयर वाज एन एविडेंस ऑफ हॉर्स, एंड देयर आर evidences of horse in certain areas or certain sites of Indus Valley. So they help to confirm or reject a hypothesis. A lot of historians give a lot of evidences, a lot of hypothesis. एक तरीके का अनुमान लगाते हैं वो different चीज़ों के लिए कि ये ऐसे हुआ होगा और वो वैसे हुआ होगा, और इसलिए हड़प्पा डिक्लाइन हुआ होगा, या इसलिए अशोका के लेटर मौर्यन रूलर्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं होंगे. बट कोई भी एविडेंस, वेदर इट इज लिटरेरी या वेदर इट इज आर्कियोलॉजिकल, गिव्स अस एन एविडेंस, गिव्स अस अ हिंट कि क्यों ऐसा हुआ होगा. वो हेल्प भी करते हैं हमें जो गलत हाइपोथेसिस है उनको रिजेक्ट करने में. जैसे आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी है. कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस माइग्रेट करके आए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि दे वर नेटिव्स ऑफ दिस लैंड. दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ struggles, triumphs and learnings of our past. For example, आयुर्वेदा, व्याकरण, एस्ट्रोनॉमी. हमारी बहुत सी अचीवमेंट्स थी एंशियंट इंडिया में, इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंटिंग से रिलेटेड हो. गोल्डन एज गुप्तास को उनकी पेंटिंग, उनके मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से भी कहा जाता है.
The way we were minting out gold coins is an example of India's glory in the past. So उनकी learning और उनकी गलतियाँ और उनकी जो triumphs और उनकी जो struggle रहे to bring us to what we are today, to bring us to what we can do tomorrow, is what sources indicate us. And then literary sources provide a glimpse of the socio-political economic changes in different time periods and evolution of societal processes and structures. We all know about sutras in Vedic text where the caste system arises from, or we all know about text where there is institutional structures जब बने. फॉर एग्जाम्पल अब हम G20 के ईयर में हैं जहाँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ें तो संघा की बात होती है जिसमें बहुत डेमोक्रेसी थी. सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू द मास्टर, यू कैन एक्चुअली हैव डिबेट्स एंड डेलिबरेशंस. देन सो वो सोसाइटियल स्ट्रक्चर्स, सोसाइटियल प्रोसेसेस, सोसाइटियल नॉर्म्स की तरफ इंडिकेट करते हैं. वुमेन का रोल किस तरीके का था, व्हाट वाज किंग. फॉर एग्जाम्पल अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपने पिलर्स में, ही एड्रेसेस द सब्जेक्ट्स एज हिज चिल्ड्रन एंड ही बिलीव्स दैट if the king has to be successful, a king, or maybe a king is only successful when his children are happy. So that is the benchmark that he sets for governance. Or we know how कौटल्या की थ्योरी से सप्तांग थ्योरी आई, जिससे गवर्नेंस की हम बात करते हैं आज भी, जिसने सेग्रीगेट्स करना सिखाया है हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वेदर इट इज आर्मी, कैवलरी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं मेगास्थनीज इंडिका में, जिसको बाद में और ने कोट किया है. वेयर डिड दिस सिस्टम ऑफ मैरिज कम्स फ्रॉम. सो हमारे पुरानाज बात करते हैं, बहुत सारे पुरानाज में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, वेदर इट इज मैरिज और वेदर इट इज स्त्रीधन. इन सब में टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट सोसाइटियल नॉर्म्स और सोसाइटी के और सोशियो पोलिटिकल चेंजेस के बारे में बात की गई है. So that's it for today, and I hope you like the video and comment, and we'll come back with the next video on archaeological sources. And I hope you like the video, and I hope you please share and subscribe.